for the final day of this tournament, South Goa Premier League, where four teams are battling it out to book their places into the finals. Let's see which two teams can make it to the finals. We're about to begin the first qualifier. Even the two openers are out in the middle. So wishing both the teams all the very best. So there are plenty of prizes for this match as well. For the spectators, for the final day. कळवणे आसा जे प्रेक्षकांक आसा तेणे जर भायल्यान बाउंड्रीच्या भायर एक हातान कॅच धरली जाल्यार केकेजी यांचे ओनर जे आसात अहमद खान हाणें 500 रुपयाचे इनाम दवरला. प्रत्येक कॅचेक 500 रुपया एक हातीन धरले जाल्यार दावी जाल्यार दाव्या उजव्या जाल्यार उजव्या. आणि हॅट्रिकाक 5000 रुपयाचे इनाम फाव आसा. So here we go with the first ball. Switch it in act and that's a boundary. Good start for KKJ Knight Riders. Pradeep Patil. And the hat-trick is only for Royal Challengers, Zargham Royal Challengers. If any bowler of Royal Challengers take a hat-trick, then you will be getting 5,000 rupees from your owner. Meanwhile, a good run taken. There was a chance of a run out. Bharat would have been in trouble.
And it's a leg by extra to the total. Team total moves to 5. So lot money prizes. That hat-trick prize is only for Al Zargham Royal Challengers player, especially bowler. If any bowler takes a hat-trick, you are going to get a cash prize of 5,000 rupees. For the spectators, if any spectator catch the ball in one hand, which is going to be hit outside the boundary rope, not a one drop, direct darwaza. If you catch, then 500 rupees cash prize from Ahmed Khan, the owner of KKG Knight Riders. Satish Yadav, the bowler. So far, 5 runs in this over. Now we can see a shift in the field placement, as fielders have been kept at the desired position. Only 2 fielders can be kept outside the circle because this is a power play. 2 overs will be compulsory power play. And after that, 1 will be decided by the batting team before the 7th over. Another fuller pitch, slightly outside the off stump. No chance of any run. Good fielding from a short fine leg fielder. Out in a flash, stops the ball, stops the run. Meanwhile, another good yorker from Satish Yadav. No chance of any run. This is a wonderful play bowling by Satish Yadav, delivering into the right zone, wide yorker, which makes it little difficult for the batter to get it connected with the bat. So meanwhile, consecutive 2 dot balls bowled by Satish Yadav. If any batsman of KKG scores a 50, then you'll get a cash prize of 2,000 rupees from Ahmed Khan. Another good strike into the covers. Even the fielder has been placed. Is it going to be stopped? No, my dear. Look at that strike from Bharat Arkas. Boundary takes the team total furthermore to 9. Plenty of prizes for players as well as for spectators. And this should be the motivation. Players another cash prize if you are going to hit on the C easy board, which is straight. Meanwhile, Bharat strikes a pull shot in act. What a strike. Sixer takes the team total to 15. After completion of first over, score is 15. Now, there's a big logo which is at the long on region near the stadium. If any batsman hits a 6 directly on that logo, then there's a cash prize of 5,000 from the owner of CEZ. Any batsman of KKG Knight Riders who is scoring 50 runs will get a cash prize of 2,000. Any bowler of Al Zargham Royal Challenger takes a hat-trick, then he will be richer by 5,000. Rohan Salgaonkar, another very good prospect, a good character, has been introduced to bowl the second power play over. We have seen him bowling those batting power play overs, and he was on top. But this is a different game, different opposition, as 2 teams that are battling out in the middle are from the 2 different groups. So this is going to be a very good contest. Pradeep Patil on the striking end, the 360-degree man. Shifts way outside the off stump. Lovely thinking by Rohan Salgaonkar. Delivers even further outside the off stump. A Yorker length.
Rohan starts with a dot delivery, continuing the same form from yesterday. Switch it in the act that on to the stumps. Rohan Salgaonkar strikes. What a player. But it has been asked to revive. So this has been asked whether the ball has touched the stumps or it was of the deflection. That to be checked. And the third umpire, Shivcharan Dabholkar, alias Babu, is having a hawk eye on the situation. So this is going to be a crucial juncture as all eyes at the screen, even the spectators will be taking out their mobile to watch exactly what has happened. Is it going to be a wicket? So the decision is made, and that is going to be the first wicket for Rohan as well as for Al Zargham Royal Challengers. And what a wicket to get. House station player, the 360 dimension player, could not do much. So first wicket back to the pavilion. Rohan, the Goan player, striking on the second delivery into the second power play. What a player. This is a strong character. A shy when it comes to talking, but a fighter when it comes to take the proceedings in his hand. A very shrewd bowler, very decent line and lead maintained by Rohan Salgaonkar. And now it looks to be no one wants to come out in the middle as Rohan is in charge of the bowling department. Let's see who is going to take that challenge now. There are so many rules in the modern game. Two shrewd umpires are out in the middle, Aslam Sheikh and Siddesh Naik. And there are 10 ways by which a batsman can be declared out. And one of the rule is timed out. So 8 overs have made captain to think and finally decides to send Ankur Singh top the order. So Rohan Salgaonkar taking a word of advice from the upcoming youngster, the better batsman, and right now he is had made a statement in the world of tennis ball cricket. Fardin Kazi, who is keeping the stumps, and he is the better player to give the advice to his bowlers as he is closely watching the batters as how they are going to take the proceeding. Meanwhile, successful second over so far. 44 on his back. Here we go with the next delivery. Rohan to Ankur. Plays watchfully towards the curve point region. Good fielding there by the fielder. So far, this over is without any score and a wicket on top. There's a chance. Ball takes the leading edge. Oh my dear. Fielder was waiting for the bounce and it skids off the surface. Boundary on the fourth delivery of the over. Score moves to 19. So this is exactly what is displayed on his back. Fourth delivery goes for a boundary.
And with that, score moves to 19. That was fortunate for Ankur Singh. It was not a convincing strike. Ball takes the leading edge and travels safely to the third man. Full up pitch, a chance of a catch. Is it going to be held slightly away from the fielder? Nonetheless, a survival for Ankur. Lucky second time. Meanwhile, a single takes the team total to 20. Rohan is having a very good time on this ground at Fatoda. Has bowled decent line and length throughout the tournament and now still continuing with the same. Bharat Darkas could not do much. Ball going away from the batsman. Well kept by Faldin Kazi. A dot ball to conclude over number 2. A successful over after completion of 2 overs. Score is 20 for the loss of 1 wicket. DJ. And now we are into the third over. So let's see what is going to happen. Ankur Singh will be at the striker's end. Final delivery of the second over was a dot delivery. What a lovely over considered by Rohan Salgaonkar. Has taken a wicket and have given away only 5 runs. The good form continues and it's nice to see a Goan player showing his ability and his capacity out here. Meanwhile, a short pitch delivery, hint of a leg cutter. Down the leg some wide is the signal from the umpire, Aslam Sheikh. So 1 run to the total in form of extra. With that, team total moves to 21. Nehal Bind. He was also one of the reasons for which Royal Challengers are toppers. Another good strike, chance of a catch. Is it going to be held? Ball goes away much ahead of the cover fielder. A sweeper was in act only to watch the ball sailing past. 6 takes the total for the more to 27. Switch hit and a beautiful connection. Chance of a catch. Oh my dear, missed by the spectator and he has dropped 500 rupees from his hand. Nonetheless, team total moves to dangerous figure 33. Weighted onto the back foot, immediate switch, the grip, and that was
even a big six over the point region. Missed by the spectator, dropped 500 from his hand. Another switch in the neck, no connection, ball straight onto his back. So we welcome Jai Bhosle in this tournament on the final day. All Malwani Masala will be out in a flash in the day. Meanwhile, down the leg stump, as the fine leg fielder has been placed very much fine to the keeper. Wide is the signal, has stopped that extra run. Score moves to 34. Another good strike along the carpet. Ball has been hit towards the cow corner region. Fielder from the deep long on gathers the ball quite comfortably. Strong throw restricts the batsman for a single. And with the single, team total moves to 35. Third over in progress. Even they have lost a wicket, but the run rate continues to about 10 runs per over. Change in pace, asking for the trouble. A pull shot in act. Bharat Tarkas connects to the maximum. Sixer takes the team total to 41. It was a leg cutter but dropped very much short. Has survived yesterday but could not survive today. And this big six takes the team total to 41. So Bharat Tarkas also joining the party. If any batsman score 50 of a KKG Knight Riders, then you will be awarded a cash prize of 2,000 rupees. Any bowler who is going to take a hat-trick will get 5,000 rupees from your owner. Meanwhile, a ball takes a inside part of the bat, travels safely to the fine leg. Shabir gathers the ball quite comfortably. A dot ball to end over number 3. After completion of 3, score is 41 for the loss of 1 wicket. DJ. ₹5,000 from his owner. Any batsman who is scoring 50, individual 50, will get ₹2,000 from Ahmed Khan. Meanwhile, there's a correction chance of a catch. Amit Damsekar, oh my dear, I could not believe my eyes. That was a simple looking catch. Captain would have taken a wicket on the very first delivery,
Missed by Amit Damsekar. I can't believe my eyes that he is the safest pair of hand. And I don't know how come he could not held on. With that, and even the third umpire is in act as there was a hit at the striker's end. So we are going to check as what is going to be the decision. There was an appeal for a run out at the striker's end. And third umpire now busy watching it on the screen. So the decision has been made. Batsman is safe as he has reached right on time up. And with this couple of runs, team total moves to 43. So that was a lucky escape. If he has to get little late, even by a second, then that would have been curtains for Ankur Singh. Very quick, lucky escape for Ankur. Switch it into act and what a hit! Even it goes away from the spectator as well. Big six from Ankur Singh. Ankur doing his job for what he is sent top the order. And he is the ultimate hitter at the moment. Big six takes the team total to 49. Just a run short of half century for the team. And Ankur being the architect now for getting such a huge scoring run rate. So let's see what is going to happen. Captain getting the beating at the moment. Catch was dropped. Again ball takes the inner part of the bat. Goes straight to the keeper. And every six that have been hit by Ankur Singh will be hunting to Amit Damsekar as that catch will come in front of his eyes. Let's see what is going to happen. He will be praying. Another hit. And the result is going to be same. Oh my dear. Even it is missed by the spectator. Wanted to judge but could not judge it properly. Nonetheless, second six from the bat of Ankur Singh in this over after a drop catch. And all eyes will be on Ami. So big six takes the team total to 55. 50 up for KKJ Knight Riders. And what a way to get it by hitting a big six. Another hit. All the fielder is there. Oh my dear. 500 rupees. Ahmad Khan, please note you are. A player has taken a one-handed catch, 500 rupees. Asking that spectator to come over here and take your prize from Ahmad Khan. Cash prize of 500 rupees for one-handed catch outside the boundary rope. Team total moves to 61. What a hitter of the tennis ball. Another good strike straight to the fielder. Oh my God, Navdeep. And even it traveled the distance. What could have been a wicket. 2 times survival for Ankur Singh. And that boundary takes the team total to 65. So much drama happening out in the middle. Ankur Singh is playing at the individual score of 42. Just 8 runs away from taking those 2,000 rupees from Ahmad Khan.
be in the dugout. And spectators, please, you have to move from the dugout. Meanwhile, a cash prize of 500 rupees won by Mayur. And now it's time for me to take a little rest, inviting Ashok Chinaik with the further updates in national language. अहमद खान बाबा मातसो यो आणि 500 रुपयाचे जे इनाम 500. थैंक यू सॅगी, धन्यवाद. कॉंग्रॅच्युलेशन मयूर. केन्ना केन्ना आमी टुर्नामेंट खेळटात आणि बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलर प्रायज जे इनाम आसता फूल टुर्नामेंट खेळून ते 500 रुपया आसता. तुवें फक्त आज हात भायर काडून 500 रुपया घेतिल्ले आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. थँक्यू. उलय मरे कितें. थँक्यू हरीश सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मयूर. 4 ओवर का खेल समाप्त. 5वें ओवर की शुरुआत सतीश यादव सामने से फातोड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, और अंकुर सिंह बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी. 5 छक्के अब तक, 1 चौका. सामने भरत अर्कस 5 छक्के 2 चौके जो बल्लेबाजी में. इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस, हल्के से गेंद को ड्राइव किया. इस बार मिड विकेट पर फील्डर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का. एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 43 पर अंकुर सिंह बल्लेबाजी कर रहे. सामने भरत अर्कस 2 छक्के अब तक, 1 चौका बल्लेबाजी में 17 रनों पर कूद के अपने व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए. फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. आज कहीं ना कहीं शायद मैं अल जरगम क्रिकेट टीम की बात करूंगा. वो गेंदबाजी नहीं हो रही है, वो फील्डिंग नहीं हो रही है जो पिछले 2 दिन में बिल्कुल जो कि देखने को मिली थी कल के दिन में. आज फील्डिंग के साथ गेंदबाजी बिल्कुल वो नहीं दिखाई दे रही है. सामने से बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी हो रही है. दोनों बल्लेबाज बिल्कुल टूट पड़ चुके गेंदबाजी पर, और इसी बीच में दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. फिर से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक सनसनाता दंदनाता छक्का. गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम की, 8 ओवर का मैच है, शायद 120-130 का टारगेट, एक बड़ा टोटल सामने बन सकता है मैदान पर. फिलहाल स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 79, लॉस ऑफ 1 विकेट, 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर. चौथा छक्का भरत अर्कस के बल्लेबाजी में, 1 चौका अब तक वो बल्लेबाजी करते हुए, और नॉन सेकर इन पर बैटर है अंकुर सिंह. थोड़ा सा अपने फील्डिंग को लगा रहे थे, इसीलिए अंपायर ने रोका, डेड बॉल का इशारा. और सतीश यादव जिन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहले ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगा, और वो खुद का दूसरा टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए. इस बार छोड़ा, बल्ले को हटाया, जाने दिया गेंद को. इस बार वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा लाइन पर भटके, गेंद अपटम से दूर थी इस बार, और जब तक विकेट कीपर के पैरों से टकराती गेंद शॉर्ट पाइन लेग पर आती गेंद को फील्ड करते, एक अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर आगे निकला 80 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर. एक शानदार शुरुआत मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी,
ओ पुल करना चाहते थे, सफल हुए थे, लेग कटर गेंद, लेकिन इस बार बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के पास निकली। क्वालिफाई 1 मुकाबला जो जीतेगा अंतिम फेरे में फाइनल में प्रवेश करेगा। एक टीम को बिल्कुल मौका और बनेगा, लेकिन दोनों में से पसंद करेगी टीम कि बस अंतिम फेरे में प्रवेश किया जाए। एक तो इनाम बिल्कुल नक्की होगा, एक ट्रॉफी नक्की होगी। पुलर लेन की गेंद, इस बार गेंद निकली स्लिप की तरफ, और जब तक फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ टोटल ओवर एक, यानी 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला आज का आखिरी दिन, साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2023, ढेर सारी इनामें और उसी के साथ दर्शकों के लिए बिल्कुल जो कि एक बड़ा इनाम। एक हाथ से अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर के गेंद को कैच करोगे तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा, और एक इनाम जो कि बिल्कुल अभी अभी जो दर्शक लेकर बिल्कुल गए हैं, यह मौका जारी रहेगा दोस्तों आपके लिए। बाउंड्री लाइन से बाहर की गेंद को आपको कैच करना पड़ेगा, वो भी एक हाथ में। अगर एक हाथ में उस गेंद को कैच करोगे तो आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स के साथ, और 500 रुपए का इनाम आप जरूर स्वीकार कर सकते हैं। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 5 ओवर समाप्त हुए, 80 रन टोटल, 1 विकेट पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। असलम शेख, उन्हीं के साथ सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, दूसरी जोड़ी शिवचरण उर्फ बाबू दाबोलकर और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक। आज कमेंट्री बॉक्स में सागर गोस्वामी, हरीश काकोड़कर सर, मैं अशोक नाइक और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जय भोसले। टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम स्कोरिंग की जानकारी देते हुए विराज तेंदुलकर और हमारे ऑनलाइन स्कोरर रुद्रेश शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे बिल्कुल हमारी जो कि पूरी कमेंट्री की पूरा जो कि कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल जो कि कप्तान मनोज सर, वो भी बिल्कुल हमारे पीछे इस मैच को बिल्कुल बड़े गौर के साथ देखते हैं। मनोज अंकल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय 6x6 क्रिकेट टीम के को ऑनर सर तोहित भाई, आइए प्लीज, आपका स्वागत है। आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए, आइए प्लीज। तो बॉलिंग में परिवर्तन, अनुष केरकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 80 रन टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर जो तीसरे से 7वें तक, मुकाबला 8 ओवर का। अनुष केरकर इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार खेल किया है, इस खिलाड़ी ने अच्छी गेंदबाजी की है, हमेशा आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। छोड़ा, इस बार जाने दिया, सफल हुए थे ज्यादा इस बार, इसीलिए अंपायर ने बिल्कुल सही गेंद ठहराई। और एक बार फिर से हम शायद इशारा कर रहे, कॉल कर रहे 6x6 क्रिकेट टीम के को ओनर सर तोहित भाई। आइए सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में, प्लीज आइए सर, मंच पर तशरीफ रखिए। और इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। इस बार एक अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, और अनुष केरकर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, एक स्लिप पर फील्डर है, एक कवर पॉइंट पर, एक स्वीप पर कवर पर है, ऑन साइड पर एक शॉट फाइन लेग पर है, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक फील्डर। ये फील्डिंग की जमावत मैदान पर। फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, हवा में गोता जरूर लगाया, गेंद से दूर थे, गेंद चले गई लॉन्ग ऑफ सी मारेका से बाहर, 6 रन के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है मंच पर एक बार फिर से सभी मान्यवरों का। और अंकुर सिंह खुद के व्यक्तिगत 49 रन पर बल्लेबाजी करते हुए,
और हमारे डीजे मैन के साथ थोड़ी सी चर्चा। डीजे मैन आप भी बिल्कुल तैयार रहिए बीच बीच में सुमधुर संगीत के साथ। और 2000 रुपए का इनाम मिलेगा अगर 50 रन बनाते हैं तो। और इस बार पीछा किया तो ऑप्टम से बाहर कट होकर और बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को बिल्कुल सही रास्ते पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल अच्छे स्कोर की और कदम बढ़ा रही है। और जिस तरह से बल्लेबाजी अभी भी आने वाली बाकी, ये 2 बल्लेबाज बिल्कुल लाइन में टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद हवा में, शॉट देखना होगा लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। जरा जोरदार तालियां। 50 रन जो कि खुद के व्यक्तिगत पूरे होते हुए एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अंकुर सिंह की। 2000 रुपए का इनाम का हकदार। और अंकुर सिंह 50 रन बैट दिखाए अंकुर सिंह। ओके थैंक यू, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। अनुष केरकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। और इस बार बाहरी किनारा, पॉइंट पर मौका लेकिन थोड़ा सा गेंद से दूर फील्डर। शायद इस आउटफील्ड पर आपको बिल्कुल कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। आप डाइस लगा सकते हैं क्योंकि ग्रास है, ओरिजिनल ग्रास है इस मैदान पर। अपने शरीर को बिल्कुल झांक सकते हैं। आपने पहले दिन में अगर अब्दुल सलाम शकील को देखा होगा क्या किस तरह से फील्डिंग की थी, तो शायद मैं तो कहूंगा इस विकेट पर आप वो कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल रन स्कोर के साथ एक आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल पहुंचा 90 रन पर। एक विकेट पर 90 रन। दूर से खेला, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर एक बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। एक बार फिर से आपके लिए जानकारी, एक शानदार बल्लेबाजी अंकुर सिंह जो 50 रन बनाते हुए और वो भी क्वालिफाई 1 मुकाबले में उन्हीं का साथ बढ़िया देते हुए। भरत अर्कस अब तक 5 छक्के भरत अर्कस के बल्लेबाजी में, खुद के व्यक्तिगत 35 रन पर। लेकिन शुरू में प्रदीप पाटिल बिल्कुल सस्ते में लौटे थे, तब लग रहा था कि दबाव बनेगा इस बल्लेबाजी पर। लेकिन सामने से अगर रोहन सालगांवकर की मैं बात करूंगा तो उनके अलावा वो गेंदबाजी नहीं हुई, वो फील्डिंग नहीं दिखाई दी मैदान पर। टॉस जीता जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। सामने बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। 8 ओवर का मैच है, जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। टोटल स्कोर हो चुका है 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 96 माफ कीजिए, 96 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर अभी भी बाकी। खुद का दूसरा रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बढ़ती हुई साझेदारी देखना होगा इस ओवर में क्या होता है मैदान में। रोहन सालगांवकर एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं अपने टीम को, या वही सिलसिला वही बल्लेबाजी जारी रखते हैं मैदान पर। थैंक यू सर। इनामों के बौछार हो रही है मैदान पर। लगातार अगर 3 छक्के लगे तो 5000 रुपए का इनाम जो कि जारी रखा है। तो हमारे थर्ड अंपायर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। tenniscricket.in बहुत ही शानदार कैमरा वर्क गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम का। शाम के दौर में एलईडी स्क्रीन पर भी ये मुकाबले बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं, सुरभि लाइट्स। और देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या होता है मैदान पर।
स्कोर वहीं पर रुका हुआ, दोनों बल्लेबाज एक बड़ी साझेदारी। जो पहला विकेट 15 रनों पर आउट होकर वापस प्रदीप पाटिल 4 पर खुद के व्यक्तिगत। मुकाबला पहला आईपीएल की बिल्कुल धरती पर यह क्वालिफाई 1 मुकाबला, जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। टॉस जीता एल झरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को बल्लेबाजों को मौका दिया और 7वां ओवर जारी। खुद का दूसरा रोहन सालगांवकर पहले ओवर में 5 रन 1 विकेट चटकाया था। ये खुद का दूसरा, टीम का 7वां। और देखना होगा थर्ड अंपायर की आंख बिल्कुल। तो नॉट आउट, जो बेल्स गिर चुकी थी वो पहले ही गिर चुकी थी, इसलिए बिल्कुल चलो थैंक यू। बिल्कुल सहमति होती हुई दोनों बेल्स जो पहले गिर चुके थे। तो इस बीच में स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 98, टोटल 98 रन, 2 रन पीछे 100 रन से पहले इस मुकाबले में। सामने अंकुर सिंह नॉन सेकंड एंड पर बैटर है भारत अर्कस। रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर बहुत ही शानदार गेंदबाजी। आगे निकले डाउन द ग्राउंड इस बार, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते 100 रन इसे के साथ 2 रन के साथ पूरे होते हुए केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने गेंद को लॉप किया इस बार मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आज दोपहर के आते पर है, थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन क्या बल्लेबाजी की इन जोड़ी ने। एक बड़ी साझेदारी मैदान पर बनते हुए जो पहला विकेट 15 रन पर, उसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छी साझेदारी। अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। रन के लिए निकले स्लिप पर, फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। और यहां पर हम आमंत्रित कर रहे हैं, आइए सर जुनेद भाई ना, जुनेद भाई आइए, आपका स्वागत है। जुनेद भाई आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू। तो और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। इसी बीच में रोहन सालगांवकर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद इस बार बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग थी। फिलहाल 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर टोटल हो चुका है 106। फुल टॉस देखना होगा इस बार, मिड विकेट पर मौका बनेगा कैच का, और फरदीन काजी मिड विकेट बाउंड्री पर कैच को हाथों में लपेटते हुए बड़ी देर के बाद एक सफलता मिलती हुई अल झरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम को। लेकिन शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, बड़े शॉट, लंबे लंबे शॉट देखने को मिले बल्लेबाजी में। अंकुर सिंह की बल्लेबाजी में जो लगभग पहला विकेट प्रदीप पाटिल बहुत सस्ते में लौटे थे 4 पर, और आप देख सकते हैं जो कि रिप्ले पर 24 गेंदों में 60 रन की बल्लेबाजी, बहुत ही आतशी बल्लेबाजी अंकुर सिंह की।
बिगुल बज रहे हैं, सिट्टियां बज रही है। जोरदार स्वागत अंकुर सिंह का। शानदार बल्लेबाजी, 24 गेंदों में 60 रन और दूसरा विकेट 116 रनों पर एक बड़ी साझेदारी 101 रन की। हो चुका है 106 रन, एक बड़ी साझेदारी बनी मैदान पर। 7 ओवर, आखिरी ओवर का कमेंट्री बॉक्स में चर्चा हो रही थी लगभग 120 की, और शायद उसी की और बढ़ रही है मैदान पर। केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम फिलहाल न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान पर भरत अर्कस का साथ देने के लिए। प्रशांत गरत, आखिरी ओवर का खेल सामने दिखाई दे रहा है कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अंतिम ओवर, 8 ओवर का मैच है। अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स और उन्हीं के साथ केकेजी नाइट राइडर्स। कितना लक्ष्य रखेगी सामने, बस इस ओवर के बाद, इस ओवर की समाप्ति के बाद पता चल जाएगा क्या होगा टोटल सामने जीत के लिए 8 ओवर में। और अनुष केरकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट। आखिरी ओवर का खेल जारी, पहली गेंद अंतिम ओवर की। और बढ़िया शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर से दूर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस रन पर बल्लेबाजी कर रहे भरत अर्कस सामना करते हुए अगली गेंद का अनुष केरकर की गेंदबाजी का। फील्डिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं मैदान पर। टॉस जीता अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, सामने मौका दिया केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को। लेकिन मैं तो कहूंगा बिल्कुल फील्डिंग और गेंदबाजी, लेकिन देखना होगा वो कमी आपको बिल्कुल बल्लेबाजी में पूरी करनी पड़ेगी। और बल्लेबाजी है इस टीम की ताकत है, और खास करके बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने फरदीन काजी पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगी। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, शॉट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अंपायर का इशारा लेग बाइज का मिलता हुआ, और फिलहाल 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बाद में कमबैक गेंदबाज का। सामने प्रशांत गरत न्यू बैटर। अब ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स से ऊपर गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इनाम है जो लगातार अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम रखा है, जो इस ओवर के लिए बल्लेबाजी करने वाले जो कि टीम के लिए, और वो इनाम रखा है केकेजी अहमद भाई जिनके ओर से। थैंक यू सर, आपका एक बार धन्यवाद। तो 1 छक्का लग चुका है, अभी भी 2 लगाने पड़ेंगे 2000 रुपए इनाम पाने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, अनुष केरकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अगली गेंद लेकर। ओ बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, हाफ वॉली पर लेकर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। आप निश्चित रूप से यूट्यूब पर रिप्ले जरूर देख सकते हैं किस तरह से दोनों ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। गेंद के बिल्कुल जो कि मेरिट पर निकले, पिच पर पहुंचे और बल्ले के बीचों बीच एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, 6 रन के लिए। 2 छक्के लगातार
अगर तीसरा लगा तो मिलेंगे 2,000 रुपए का इनाम। सैगी सर 2,000 ना, 2,000 रुपए इनाम, जो कि 2 या 5 दोस्तों फिर से जानकारी दे दो, 2 पक्का, 2,000 बिल्कुल, थैंक यू सर। 2,000 रुपए का इनाम। 2 छक्के लग चुके हैं प्रशांत घर की बल्लेबाजी में, अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और देखना होगा अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा तो 2,000 रुपए। एक बार फिर से दर्शकों आपके लिए भी जानकारी, एक हाथ से कैच करो बाउंड्री से बाहर की गेंद को, और आप भी आइए 500 रुपए का इनाम लेकर जाइए। ओ इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल चूके गेंद के बारे में पूरी तरह से, और 2,000 रुपए इनाम से वंचित जरूर हो गए। 125 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर, 125 लॉस ऑफ 2 विकेट। शानदार बल्लेबाजी, अंकुर सिंह ने बनाए 60 रन, भरत अर्कस, ओ ये पटकी हुई गेंद, इस बार देखना होगा शानदार फील्डिंग, मिड विकेट पर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, थ्रो करते, बैकअप जब तक होता, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर, हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर। एक तो जरूर बना है, रनआउट के लिए ये अपील हो चुका है, 1 रन तो पक्का है, दूसरे के लिए ये रनआउट का इशारा है, और देखना होगा, हम जरूर जांच जो कि परख करें, उसके बाद निर्णय होगा। आउट, तो एक ही रन मिलेगा स्कोर में। तीसरा विकेट चला गया केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम का। 13 पर खुद के व्यक्तिगत प्रशांत गर 2 छक्के लगाए, 60 रन बनाए 24 गेंदों में। अंकुर सिंह ने 6 छक्के लगाए भरत अर्कस की बल्लेबाजी में, 1 चौका लगाया भरत अर्कस ने। शानदार साझेदारी बनी दूसरे विकेट के बीच में, जो पहला विकेट 15 पर, दूसरा 106 पर, और तीसरा विकेट जो निकलता हुआ टीम का। टोटल स्कोर एक इनाम जारी हो चुका है। दूसरी इनिंग की जब शुरुआत होगी, अगर फरदीन काजी का विकेट पहली गेंद पर अगर गेंदबाज लेते हैं तो पहले ओवर में, पहले ओवर में अगर गेंदबाज ने फरदीन काजी का विकेट लिया तो मिलेंगे 5,000 रुपए का इनाम हमारे अहमद भाई जिनके ओर से। थैंक यू एक बार फिर से अहमद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं मैदान पर, दूसरी इनिंग की शुरुआत। 126 टोटल स्कोर, और टारगेट रखा है 127 का। टोटल स्कोर 126, टारगेट 127 का। 42 रन बनाए भरत अर्कस ने, अंकुर सिंह ने बनाए 60 रन। अगर गेंदबाजी की बात की तो रोहन सालगांवकर की बात छोड़ दी जाए तो बाकी वो प्रभावित नहीं किया गेंदबाजी ने। रोहन सालगांवकर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए उन्होंने, और खेल पहले 8 ओवर का समाप्त हुआ। टोटल 126, टारगेट 127 का। अगर पहले ओवर में फरदीन काजी का विकेट मिला तो इनाम बिल्कुल आपके लिए होगा जरूर, जो एक बड़ा इनाम रखा है। देखना होगा। फिलहाल रुक करते दूसरे इनिंग के साथ कमेंट्री बॉक्स में आइए, जुड़ जाते सर हरीश काकोडकर के साथ, और उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे जो आखिरी पल में जय भोसले।
were hammered and tonked all over the park for sixes by the batting of Ankur and Bharat Tarkas. Together amongst them, they scored more than 100 runs. That was a beautiful partnership. And it looked as if they might go for even more runs. But 127, a mountain of 127 has to be chased now by the players, the batsmen of Al Zargham Royal Challengers. Well, looking at the wicket and during this time when the sun is in full flow, I guess it's quite possible to chase. But the only thing, the bowling of KKG Knight Riders is much better than the bowling of Al Zargham Royal Challengers. But if you see the batting, then they have got the batting depth. Al Zargham Royal Challengers, they have got a strong batting order with number 8 to number 9 have the capacity to hit the boundaries and sixes. So I don't think so there is going to be a second approach here. They know what is up for them in this match. They just have to go after the bowling and go strongly. Well, we have seen some catches being dropped in the fielding as well. Amit Damshekar dropped a seater, and one more catch was dropped at the long off region. One was dropped by Navdeep, which should have been taken. So lots of chances given to the batsmen, and they have taken the advantage of that. And that's the reason why the score is 127 target in 8 overs. With this man on the screens, it's very much possible. A class of his own, the talent, supremacy that this man has. Fardin Qazi, and he's out of the very first ball. Out of the very first ball. 5,000 rupees. 5,000. Yes. 5,000, Ankur. पाच हजाराचे इनाम दवरिल्ले 5,000चे जर फर्दीन काझीक पहिल्या ओव्हरीक काडटा आनी म्हाका दिसता अंकुर सिंगान पहिल्याच बॉलान काडिल्लो आसा आनी पयले फाटी आमी मनीस पळयता 5,000 वता पूण भरपूर खुश जाला 5,000 वता म्हणून 5,000 वताचे दुख ना अहमद बाब खानाक मनांतल्यान 5,000 दिल्ले आसा So Ankur has earned 7,000 rupees in this match itself. 7,000. You can see that the replay. What a start given. Wonderful line length just outside. He went for the big drive and it was in the cover. Second attempt, the fielder takes the catch. A rollicking start. Saish taking that catch. Very good catch from Saish. Now the bowling attack will be relaxing a bit. Karan Mori. This time he swept it away, but there is a man placed for that sweep. And you see that fielding, they kept 3 men at the backward of point for him, 1 in the short covers. They have done the homework. They have absolutely done the homework in a perfect way against Fardin Qazi. And it has come right for them. It's right in the first over. And wide signal here by umpire. Very well left here by Amit Damshekar. This is the time that AB Amit Damshekar has to come good here. He has to play a good knock. It's not about just 1 6, 2 6s or 3 6s. It's about a good knock of 30 plus runs at least from his bat. Amit Damshekar used to like the jersey number 99, but now he's wearing the jersey number 69. This time very nicely played, chance of a run out, but they made it well in. Watchfully played by Ame. That should be planning. It's not about just because Ankur Singh and Bharat Tarkas has hammered all the bowlers. They also can go after the bowling. They have to have planning. They have to target the bowlers.
and go after them. Ankur Singh has started so well in this match, not only in batting but now once again taking the all important wicket in this run chase. This is very nicely played. This is in the gap and goes for 4 runs. Timed very well here by Karan More, getting a boundary finally. They were waiting to get a boundary and a 6 in the first over, and a good shot over a wide long off region fielder. Well, Ankur Singh was very alert after that catch was taken by the fielder. He was immediately pointing me. Yes, I thought sometimes the bowlers just raise their hands like 5 fingers, but that's when a 5-wicket haul is taken. But this time he was showing 5 fingers because it was 5,000. That's it, outside edge and catch taken. One more wicket going down. It's the day of Ankur Singh. You just cannot take anything away. The man has done a fabulous job and is continuing to do so for KKG Knight Riders. Both important wickets. They have got a 2 outstation player and 2 big players, Fardeen Qazi and Karan More. I was watching the replay here on Tennis Cricket, and you see what Ankur Singh was doing. He was trying to glide the ball away from the right-hander. Here comes the replay once again. Karan More was trying to play that on the leg side first. He shuffled across. He still bowled it wide. Got it away from the right-hander. Got an outside edge and taken down in the gully region for a good catch. Gopal Gauss, the captain of the side, easily taking that. If another 5,000 was kept here for another wicket, then Ankur Singh will have got 10. तसंच लॉंग ऑनाच्या दिशेन लॉंग ऑनाच्या दिशेन म्हळ्यार सध्या थर्ड मॅनाच्या दिशेन सी इजीचो लोगो आसा. सी इजी मुश्ताक बाब अहमद हांची कंपनी आणि त्या सी इजीचो लोगो आसा ताजेर जर तर कोणें मारलो जाल्यार 5,000चे इनाम घोषित केल्लें आसा मुश्ताक बाबान. लोगोचेर डायरेक्ट लोगोचेर फिशाचो जो लोगो आसा त्या लोगोचेर पडपा जाय. सारखे अर्जुनान जसो नुस्त्याच्या दोळ्याचेर बाण मारिल्लो तसो तुमी बाण मारपा जाय 5,000 घेवपाक. Here comes the next over. Gopal Gauss, the captain of the side. Was going for the switch hit. Appeal there from behind the wicket. No reaction from the batsman. Sometimes when the batsman reacts, he knows whether he has hit it or not. It's more sort of excitement from behind the wicket. So what Ami has to do here? I think the switch hit. I think with the fielders inside, the way Ankur Singh has batted with those switch hits is definitely on, but he has to select the right ball to play that switch hit. This time finding the gap. Is it going for 4 runs? No, very well fielded and 2 runs comfortably taken. Well, Gopal was very alert that Ame was slow off the box while taking that first run, and he threw at the striker's end. Ame Zamshekar is a very good leather ball player, and he has played a lot of leg spinners in his career. That time, the asking run rate is never around 15 runs per over, but here in tennis ball cricket, the ball dries up very easily. They soak up very fast, and the asking run rate, which with each and every dot ball with a single climbs up.
What a ball, and wide signal here. It turned way too sharply, says the umpire, and a wide signal. Gopal Gauss is not happy, but umpire is saying this is too much of turn to handle and going outside the guideline. Right now, KKG Knight Riders are on the top, but one innings from Al Zargham side can change this match. You can see this is a perfect length, perfect line. And with the keeper standing in front behind the wickets, it's very difficult to come down the track as well. So what are the options? This mandatory batting power play so far has gone totally in favor of the bowling side. Score at the moment is 10. Navdeep Gaonkar has come on to give the company this time. This is in the air. This might be catch, and not a convincing shot. Once again, he goes for the second. This ball, the timing was missing. It just went high, not got the distance. Getting once again twos. Ones and twos. Well, KKG will be happy because these are the power play overs, and if only 12 runs have come, a credible, super job has been done by the first two bowlers. This time Amir strikes. This time it's a 6 runs and 500 rupees. One more 500 rupees. I think the spectators are very much ready. Spectators are very much aware that 500 will be up for grabs. And I guess all the spectators are moving with one hand on the ground. One hand they are moving. And Afridi from Sharjah boys. काल 200 घेतिल्ले आणि आज 500. And that's again a good shot. Wonderful shot here from Amit Amshekar. This is good batting. He is showing a little bit of his talent at this stage. After 2 overs, the score is 22 for the loss of 2. Ahmed Khan, KKG's owner, Ahmed Khan. Ahmed Khan म्हणता कॅन्सल केल्ले आसा हे सारखे न्हू कारण प्रायज आसा जाल्यार सारखे अनाउन्स करपा जाय आणि 500 फक्त 1000च गेल्ले आसा ट्रॉफी म्हाका दिसल्या जिखलो जाल्यार तो खुश आसतलो असो म्हाका दिसना ताणें फाटल्यान सरपा जाय कारण स्पेक्टेटर चडान चड 3 ते 4 कॅची धरपा शकता दिसाक चड धरपा शकना तो म्हणटा एकच मॅचीन 2 धरल्या. So once again back concentration on this match. Comes Vinod Wilson, very nicely played in the covers. Should be only a single. There is a deep covers placed for that shot. What are the options they have? One thing the batsman should have a switch it. Vinod Wilson is a street smart cricketer. He is a very good bowler, very good all-rounder, and plays a lot of cricket, especially leather ball cricket. He plays. And he knows what the batsman is trying to do and what is the asking run rate. He can bowl that Yorkers consistently. I have seen him playing some good knocks, some handy knocks with the bat, and he can tongue the ball to all the parks, and also can be handy with the ball by bowling those 2 overs whenever required by the team. He has timed it well and catch dropped.
A chance given here to Ahmed Amshekar, but a good effort there from the fielder. He was coming in, diving forward. Not easy when you are coming in front. The ball sometimes when you are diving just pops out of your hands, and nothing short of the effort here. It's not an easy catch, mind you. That's a good shot. Should be a boundary right in the gap. Lovely looking shot. Great timing and a great punch from Navdeep Gaonkar. They need these two Goans to come on top of their game here and need to come early as well, fast as well. Cannot take too much of time. Asking run rate climbs after each and every over. At the moment, the score is 28. Two balls left of the third over. Once again, a good shot. Might be a catch. No. 4 runs. So 2 boundaries of 2 balls. The ball bouncing more than the height of Ankur Singh. He should have, I felt that should have come for the catch. But finally, a boundary here to the batting side and the batsman Navdeep Gaonkar. That will give him some sort of confidence. Let's see whether he can go for one more one. Score moves on to 32. Just 32, third over in progress. Oh, that was a full toss ball. He wanted to play it in the covers. Once again, this time missing it. He knows you can see the reaction, but a single to finish this over number 3. And the score is 3-3 for the loss of 2. This is the second call for the toss. Tossa खातीर दुसरो call हो Oxford Titans आणि Dynamic Royals. Captains मातसो tossa कियो. Second call. After, let's see who is going to be the bowler here. So Gopal Gaun's looking to finish his overs and quota of 2 overs. Both the wickets were taken by Ankur Singh, and Gopal Gaun's very well knows we have to break this partnership. Although it's not scary at the moment, but with 5 overs and almost close to 90 plus runs required, there comes to around 20 runs per over, close to 20 runs per over. This time that's a good hit. This should be 6 runs. Where is the ball? And he's out. Oh my God, I thought the ball has gone for 6 runs, but it was high in the air and it came down fast. Catch taken pretty well in the deep square leg region, and a wicket here for Gopal Gaus in the first ball of his second over. So final call here for Oxford Titans captains and Dynamic Royals captain. जर तुम्ही येनात जाल्यार 6 ओव्हरीची मॅच खेळतले. Please take a note. The next match will be of 6 overs if you are not coming for the toss. At least one captain should come here. आम्ही जर तर एक कॅप्टन आयलो जाल्यार त्या कॅप्टनाक आम्ही टॉस हँडओव्हर करतले जर दुसरो कॅप्टन येना जाल्यार.
So in comes Shreyas. Shreyas Kadam. So Gopal starts off very well. Navdeep is back in the pavilion once again. Gopal. That's a good ball. He knows that's a perfect ball that he bowled. He knew what Shreyas was trying to do. Coming, shuffling across and trying to play that slog sweep over square leg region. He bowled a full ball just outside the leg stump and ball turned it away sharply. The leg was there of Shreyas. Otherwise, he would have been clean bowled. Smart thinking, very smart thinking from Gopal Gaus. So now both the captains have come. Both these captains want to play 8 hours match, so they have come immediately. Mukhtar Qadri and Syed Badi. So again going for the switch hit. Looking at the way he was going for the switch hit, doesn't look like to be natural switch hitter. Ankur Singh, we have seen how in authority he was hitting the switch hit. He may be looking to practice a lot. You need a practice for the switch hits. So now we are... This is in the air. That's wonderfully tossed up delivery. And Shreyas also goes back in the pavilion. Gopal Gaus strikes. So we are here for the toss ceremony. Toss is going to be... First, uh, we have to play our best 8 overs over there. Now we don't know second batting might be in light or not. That's why we cannot take a chance. That's why we are taking a batting. This is a very surprising decision as 8 overs match, and most the toss winning captain, they always try to bowl first, but very much surprising. All captains have different strategies anyways. Best of luck for you. But the toss is not in your favor, but still looks to be you were expecting that you are going to bat, but very surprising decision. So what is your say about it? Yeah, actually we wanted to bowl first, and luckily Mukhtar bhai won the toss and still he gave us bowling. So we have to bowl our heart out, and this is the quarter final and important match as a final. We have to play as a final. So this is eliminator number 1. The team winning will get one more chance and will step ahead and will be playing against the losers of this qualifier. So what do you think as you are bowling first? What will be the target in your total to restrict the Oxford Titans? Because this is also a very good team. So what is the figure in your mind that will be comfortable for you to chase? Like we have to restrict them as much low score as we can, and like we have to bowl really well, and we have to think a particular match at a time. Okay, but they're not going to ask you much because those are the strategies that you have to plan. It's time to take a photograph. Thank you, Segi. And look at the variety of bowling attack of KKG Knight Riders. They have got one left arm medium pacer. They have got a wonderful leg spinner. They have got a wonderful right arm medium pacer. And still 2 options we are yet to see. So far the variety is so good, and that's the reason why it's a very strong bowling unit. That's a good shot. Amit Damshekar is fighting a lone battle here. He can still do wonders. Not only here, but he can get the form, he can get the timing back, and still there are matches. There is also one more chance. So all the batsmen who are coming in, they first should think of the victory. If not, then they should think that yes, if at all we are losing here, we should get an opportunity, we should play well, we should bat well. That will give and raise the confidence in the next match that they are going to play. After 4 overs, the score is 40. Just 40. It is going at 10 runs per over. Not a bad total, but the asking run rate is so much that even 10 runs per over is looking so small. With 10 runs per over in 8 overs, they can get at the most 80. So that's not going to take anywhere because it is 127 on the board to be chased. It's very good actually. Even in IPL we see many times not only the players of KKG Knight Riders will get rest
for the finals, if at all they are going to win this one. There is still a long way. 50% of the match is over. 50% in this inning still left. But if at all they go on to win, their players will get rest, and they can wait for that finals and watch other teams playing. And teams like Zargham or Dynamic or Oxford have to play 3 matches and win 3 matches if they have to win the title. This time wonderful drive, but there is a man in the covers region. Well, I saw that ball from Gopal Gaons, which got a wicket of Shubham. You need to have Shreyas Kadam. You need to have guts. You need to have guts to bowl that flighted ball. That is rarely seen nowadays. That art has gone disappeared, but Gopal Gaons has still kept it alive. And he troubled that batsman with the flight. He went for the slog sweep, and good catch taken. So all the credit goes to the bowler over there. Wrong ball being used here, or tried to play that sweep shot. The intentions, I always say regarding the switch, it should be at the last moment and you should have quick hands. Glenn Maxwell does it very good, in a good way, does it at the last moment. Kevin Peterson was the master of it. Warner also plays it in good ways. Nowadays, modern cricketers in each and every game, switch it has become an important asset, important tool for any of the batsmen to trouble and make hardships for the bowler. So again, trying to hoik that ball over the mid-wicket region. Nothing happening here for the batting side. Zargham Royal Challengers. Yes, some moment of brilliance with 2 sixes so far from Amit Amshekar, but it's not moving at the pace to win them this match. This time very nicely hit, no one there. This is timed well, and a straight hit. 6 runs. Wonderful straight hit from Anush Kirkar. This time he never intended to play it across. Straight bat is better, he says, and giving the maximum return. 48 now the score moves on to. This time in the air, this should be catch. Fielder coming, and all the catches has been taken here by the fielders of KKG Knight Riders. They are taking the catches, and that's the reason. One more wicket, that is the 5th wicket going down at the score of 48. 48 for 5, 5th over in progress. Some beautiful Kokani songs, Kataras. We as Goans love it, and now it's an opportunity for everyone to listen to a few of those. Meanwhile, Rohan Sargavkar, very good all-rounder, especially a bowling all-rounder, done a fabulous job with the ball. Now comes at number 7 spot, 5 down. Oh, he plays a good shot, was 6 runs. That was full toss and hits it on the screen. This is Rohan Salgaonkar. He is not only capable with the ball, but he is with the bat as well. And that's the reason why I say Al Zargham is a very good side. They have got good batting. The problem is the bowling department. They need to correct it as fast as possible in the next match. Otherwise, it's going to be difficult for them against some strong teams. Meanwhile, I will hand over the mic. I will give the mic to a commentator who has come all the way, especially today, from all the way from Banda, for the viewers on tennis cricket, because they had told us that they need a commentary in Marathi.
as a lot of spectators joining, watching the South Goa Premier League from Maharashtra. So this is for the viewers of Maharashtra. Here comes Jay Bosle for his commentary in Marathi. सर्व क्रीडा रसिकांचं या क्रिकेटच्या मैदानावर हार्दिक स्वागत. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 54 धावा धावफलकावरती. 127 धावांचा पाठलाग या मैदानावरती. पंचांचा इशारा येतो बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा. या मैदानावरती अजूनही उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये मोठी धावसंख्या तुम्हाला गाठायची आहे आणि मोठी धावसंख्या गाठण्यासाठी तुम्हाला मात्र समोरच्या गोलंदाजावरती तुटून पडायचं आहे, कारण त्यानंतर तुम्हाला निश्चितपणे एक संधी जरूर मिळेल. मात्र तत्पूर्वी बॅटिंगचा सराव करण्यासाठी हे 18 चेंडू तुम्हाला महत्त्वपूर्ण असतील. 8 षटकामध्ये तुमच्या गोलंदाजाने खराब कामगिरी केली आणि त्याचा फटका तुमच्या संघाला बसलाय. मात्र त्याची कसर या ठिकाणी बॅटिंगमध्ये तुम्हाला भरून काढायची. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि तब्बल 73 धावांची आवश्यकता. डोंगरा एवढी धावसंख्या. मात्र डोंगर चढताना ताठ मानेने वर चढा, कारण कोणतंही यश तुम्हाला सहजासहजी तुमच्या डोक्यावरती सोनेरी मुकुट राखू देत नाही आहे आणि तुम्हाला जर सोनेरी मुकुट राखायचा आहे तर डोंगर चढून ही धावसंख्या तुम्हाला पार करावी लागेल. स्विंग अँड मिस, बऱ्यापैकी चेंडू गुडलिंग स्पॉटच्या जवळपासचा. बॅट हवेत फिरली जाते. विकेट किपर बाकीचं सोपस्कार पूर्ण करतोय. अंकुर सिंगने अवघ्या 24 चेंडूचा सामना करत तब्बल 60 धावांचा पाऊस या मैदानावरती पाडला आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या त्या फलंदाजीमुळेच बॅकफुटवर ढकलला गेला तो समोरचा संघ. नितेश हा गोलंदाज ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर. विकेट किपरला चकवतोय, बॅट्समनला चकवतोय. पंचांचा वाईडचा इशारा येतोय. वाईडच्या या टोटल मिळतील 5 धावा आणि या 5 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 59 धावांवरती. 127 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. अजूनही निम्म्या धावांचा टप्पा गाठला जात नाही आहे. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं मैदानावरती तुम्ही जे कराल त्यावरती तुमचं भवितव्य अवलंबून असतं. तुम्ही काल काय केला, त्याच्या अगोदरच्या दिवसात काय केला, त्याहीपेक्षा वर्तमान काळात तुम्ही कशा पद्धतीने आपल्या आघाड्यावरती काम करता त्याच्यावरती विजय आणि पराजय हा तुमचा निश्चित असतो. परत एकदा आडव्या बॅटचा फटका. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक मिडॉनच्या दिशेने चेंडू जातोय. परती होईल तोपर्यंत केवळ सिंगल मिळते. सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या 60 वरती परावर्तीत होते. अजूनही 67 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. तब्बल 127 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान या क्वालिफाईड 1च्या सामन्यामध्ये. जो जिंकेल तो थेट फायनलमध्ये, जो हरेल त्याला एक संधी असेल एलिमिनेटर राऊंडमधील विजयी झालेल्या संघाविरुद्ध क्वालिफाईड 2 मध्ये खेळण्याची. परत एकदा थोडासा आखूड पद्धतीचा चेंडू. गॅप मधून चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी बऱ्याच वेळानंतर निघतोय हा चौकार. म्हणजे निम्मा टप्पा गाठला जातोय ही अपेक्षा होती ती 4थ्या षटकात. मात्र तो निम्मा टप्पा गाठला जातोय. तो 6वं षटक अर्थात बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक या मैदानावरती सुरू असताना. 127 धावांचा पाठलाग आणि आतापर्यंत अवघ्या 64 धावा धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा. वाईडचा ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर असलेला चेंडू. वाईडने एकेरी धावेची भर पडते. धावसंख्या पोहोचते ती 65 धावा धावफलकावरती. 127 धावांचा पाठलाग करताना नितेश परत एकदा बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला दिसतोय. रोहन सालगावकर थोडासा सेपल होतोय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर हवेमध्ये खेळतोय. चेंडू उंच उडतोय, कारंजा उडतोय. 3 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू पडतोय. स्वतः गोलंदाज झेल घेण्यासाठी गेला होता, मात्र त्याच्यापासूनही बराच दूर चेंडू. तोपर्यंत केवळ 1 धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 66 धावा धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 127 धावांचा पाठलाग या मैदानावरती होताना
नितेश परत एकदा बॉलिंग मार्कवरती दिसतोय. मित्रांनो, ज्या म्हटलं जाचं ज्याची वेळ चांगली त्याची संपूर्ण कारकीर्द चांगली. जर तुमचा वेळ खराब असेल तर तुम्ही झाडावर जर जाऊन बसला तर खालून येऊन कुत्रा तुम्हाला चावल्याशिवाय राहत नाही. परत एकदा नितेश बॉलिंग मार्गवरती आडव्या बॅटचा फटका, बॅक टू द बॉलर, सुरेख क्षेत्ररक्षण, फॉलो थ्रू मध्ये निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. मी म्हणेन या ठिकाणून सामन्यामध्ये परत थोडंसं कठीण वाटतंय. मात्र पुढच्या सामन्यात तुम्हाला संधी मिळेल क्वालिफाईड 2 मध्ये. तोपर्यंत फलंदाजीची संधी करावीच लागेल. फलंदाजीचा सराव या ठिकाणी तुम्हाला करावा लागेल या मैदानावरती. एक मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन या tenniscricket.in च्या माध्यमातून लाखो प्रेक्षक या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याशी जोडले गेलेत. परत एकदा नितेश बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला दिसतोय. परत एकदा कव्हरच्या दिशेने एक सुरेख फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या पाठलाग केला जातोय. यावेळी मात्र चेंडूची सर्च येते, चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. चौकार आणि धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 70 धावावरती. आता उरलेत या इनिंग मधील अवघे 12 चेंडू आणि 12 चेंडूत अजूनही 57 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सामन्यात जय पराजय कसा होईल यापेक्षा तुम्ही मैदानामध्ये लढला कसे, मैदानामध्ये तुम्ही काय केलंय यावरती क्रीडा रसिकांच्या नजरा असतील. आणि त्यानंतर मात्र आजच्या दिवसाचा जर विचार केला तर सर्वांच्या तोंडी एकाच खेळाडूचं नाव आपल्याला येताना दिसेल, तो म्हणजे अंकुर सिंग. गोलंदाजीमध्ये त्याने अतिशय, फलंदाजीमध्ये 24 चेंडूत 60 धावा कुठल्या, गोलंदाजीमध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी करत 2 गडी तंबूच्या दिशेने रवाना केलेत. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स कसा असावा आणि आपल्या संघाला संकटमोचकाची भूमिका त्याने बजावावी ते दाखवून देतोय. मराठीच्या समालोचनानंतर थोडं वळूया आता मालवणीच्या आकाशवाणी केंद्रावरती. देव बरा करो गावल्यानं जाऊया मैदानावरती. क्वालिफाईड 1 चो सामनो, आडव्या बॅटचो फटको मारूचो प्रयत्न, चेंडू मात्र जाता मेडन, चेंडू जाता पोलांडो. निर्धाव चेंडू समाप्त होता. अंकुर सिंग बद्दल सांगूचा झाला तर आज सकाळी रूम मधून निघताना कोणाचा तोंड बघून इल्लो या त्याकाच माहिती असताना. सामना संपल्यानंतर आमका सांगूक हरकत नाही, कारण यानंतरच्या होणाऱ्या सामन्यासाठी त्याच माणसाचा तोंड बघूची जबाबदारी असतील ती दुसऱ्या खेळाडूंची. परत एकदा आडव्या बॅटचा फटको, चेंडू मात्र जाता मेडन, चेंडू जाता पोलांडो. आणि तुम्ही आमच्या उजव्या बाजूक बघतात भोपूचे आवाज, कॅरेबियन बेटावरती इल्याचो भास निर्माण करणारो ह्यो आवाज तुमका बघूक मिळतलो तो त्यांच्या संघाच्या समर्थकांचो. एक मोठी देखणी क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरचा विचार केलो तर परत एकदा तसोच चेंडू, बॅट फक्त फिरयता. मालवणी भाषेत एका म्हटलं जाता बॅट्समन फक्त वलयता. चेंडू जाता मेडन, चेंडू जाता पोलांडो. धावसंख्या मात्र एखादा डंपर चिखला धृतान बसावं तशा पद्धतीने धावसंख्या स्थिरावलेली फक्त 70 रन्स वरती. आता फक्त गरज असा ती या डंपराक टोचन करूची. परत एकदा स्लोवर 1 पद्धतीचा चेंडू, फ्लाईट थोडीशी दिलेलो हे चेंडू डीप कव्हरच्या दिशेने खेळला जाता. केवळ सिंगल मिळता, सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकता. धावसंख्या पोचली ती बऱ्याच कालावधीनंतर 71 रन्स वरती. 127 धावांचा पाठलाग करूचो असा म्हणजे मालवणीत म्हटला जाता मुलाम्याचा नाना आणि तालाशिवाय गाना एका सध्याच्या दुनियेत कोणच विचार नालाय. हवेत खेळलेला फटको, कारंजा उडता, आणखी एक कलाम लागता, 100 गडी तंबूच्या दिसेन डीजे. जर 23 आणि दुसरं सीझन आणि या जर मैदानावरती बघू गेल्या 4 दिवसापासून तुमका या मैदानावरती रंगीबिरंगी कपड्यामध्ये खेळणारे खेळाडू दिसतात. म्हणजे जेणेकरून मे महिन्यात मध्ये होणारी IPL ची स्पर्धा त्याच्याऐवजी ही मिनी IPL ची स्पर्धा तर या मैदानावरती भरली जाऊक नाही मा हाच भास करून निर्माण देणार ही क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरती बघू मिळतात. आणि ती लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची किमया tenniscricket.in च्या माध्यमातून गौरव सावंत यांचे तमाम सहकारी साकारताना दिसत आहेत.
परत एकदा हलक्याच हाताने खेळून काढलेला चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जाता चेंडू जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक उचलता तोपर्यंत एकेरी धाव मिळता आणि एकेरी धावेन धावसंख्या मात्र 7 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 72 धावा धाव फलकावरती. या षटकात अंकुर सिंग केवळ 2 रन्स खर्च करतात आणि 1 गडी तंबूच्या दिशेने रवाना करतात. भव्य अशी ही क्रिकेट स्पर्धा मित्रांनो, जर तुम्ही tenniscricket.in माध्यमातून यूट्यूबशी जोडले गेला असाल तर ही स्पर्धा बघा, ट्रॉफीज बघा. या स्पर्धेतले ट्रॉफी जर बघितलात तर एखाद्या मोठ्या 20-25 लाखाची क्रिकेट स्पर्धा असतात तशा पद्धतीचे ट्रॉफी आणि तशा पद्धतीचं आयोजन या मैदानावरती तुमका बघूक मिळतला. गोवा राज्यातील ही सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा, संपूर्ण दर्जेदार आयोजन, कॉमेंटेटर दर्जेदार, लाईव्ह दर्जेदार आणि मान्यवर सुद्धा दर्जेदार अशी क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरती बघूक मिळतात. जाऊया शेवटचा षटक, अर्थात इनिंगचा सांगता करणारा, ज्याका मालवणी भाषेत भैरवी घालणारा षटक आणि शेवटचा षटक घेऊन येतात तो प्रदीप पाटील. फलंदाजीमध्ये जास्त काय करू शकत नाही, मात्र गोलंदाजीमध्ये हे 6 चेंडू अर्थात 72 धावा धाव फलकावरती. अजूनही बऱ्याच रन्सांचा पाठलाग करूचो असा, मात्र 6 चेंडूंचा अवघ्या खेळ बाकी असा. मोठो फटको कारंजो उडता डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, मात्र बॅकवर्ड पॉइंट वरती चेंडू जोपर्यंत जाता अडवले जाता 1च धाव मिळता. एकेरी धावेन या सामन्यात बद्दल बोलायचं झाला तर सामनो केवळ औपचारिकता शिल्लक असलेलो अशा पद्धतीतलं सामनो. या इराद्यान प्रेक्षक मैदानावरती उभे ठाकलेले त्यांच्या दृष्टीनं भ्रमनिरास करणारो ह्यो सामनो. हवेत खेळलेलो फटको कारंज उडता, सुदर्शन सारखो चेंडू फिरता, क्षेत्ररक्षक चक्को देत चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सीमा पार जाता 4 रन्सासाठी. 4 रन्सान धावसंख्या मात्र पुढे सरकली ती 77. सातक्याचो डबल गेम या आकड्यांच्या खेळात आज सुट्टी असा, उद्या सातक्याचो डबल गेम खेळा हरकत नाही. बॉलिंग मार्कवरती परत एकदा गोलंदाज दिसता प्रदीप. यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने खेळलेला फटको, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात, परतीची जोपर्यंत फेक तोपर्यंत केवळ 1च धाव. आता उरलेत या षटकातले केवळ 3 चेंडू आणि धावसंख्येचा जर विचार केलो तर न सांगलेलाच बरा. फलंदाजाबद्दल बोलायचं झाला तर एकच खेळाडू फक्त अमेयान 27 रन्सांची खेळी केली, बाकीचे खेळाडू तू चल मैं आया अशा पद्धतीची फलंदाजी करत केवळ हजेरी लावण्याचं काम आणखी एक कलाम लागता, आणखी एक गडी बाद होता. कोळी गीता खूपच फेमस असतात. गोव्यातली कातरा लागली न नाचणार सुद्धा लागता आणि कोळी गीता लागली तर न नाचणाऱ्याच्या अंगात सुद्धा देवी संचारता असा बराच वेळ बघूक मिळता. म्हणून मैदानावरती ती मोठमोठे जेव्हा क्रिकेट स्पर्धा असतात गोवा राज्यात तेव्हा कातारा लागतात आणि महाराष्ट्रात मोठमोठे क्रिकेट स्पर्धा असतात तेव्हा कोळी गीतांचो तुमका बागुल भोवन असताना दिसता. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असा. प्रदीप 1 विकेट आपल्या संघासाठी प्राप्त करता आपल्या खात्यामध्ये. फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटचा फटको परत एकदा मिळान मिड विकेटच्या दिशेने जाणारा चेंडू अडवला जाता 1च धावेत. आता मात्र उरलो शेवटचो अर्थात इनिंगची भैरवी करणारा चेंडू, इनिंगची सांगता करणारा चेंडू. रोहन स्ट्राईक वरती दिसता. हे चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर, पंचांचा इशारा वाईडचो, ज्याका मालवणी भाषेत बादल चौधरी कायम म्हणतात बघता भजी आणि मागता वडे. 1 रनचा धावसंख्या मात्र पुढे सरकली अवघ्या 79 रन्सवरती. 80 रन्सवरती आणखी एक गडी बाद होता, म्हणजे इनिंगची सांगता होता. केवळ 80 रन्सवरती ही पहिली इनिंग संपता, म्हणजे तब्बल 46 धावांनी एका मोठ्या विजयासह फायनल मध्ये प्रवेश करता तो